kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 4, Industries. Okay, so let's start now this chapter, kids. Industry is said to be that part of the business activity which works in order to produce satisfying goods with the help of the material resources readily available. यहाँ तक कि जो इंडस्ट्री है वो बिजनेस का एक ऐसा अहम पार्ट है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो सब इंडस्ट्री पर डिपेंडेबल होती है. विदाउट इंडस्ट्री हैव नो बिजनेस एक्टिविटी. ओके, चलिए. इट्स वर्क इज यूज द नेचुरल रिसोर्सेज. जब इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होते हैं. एंड बिगिन ब्रिंग देम इनटू अ फॉर्म दैट इज यूजफुल फॉर फर्दर. एग्जांपल फार्म्स, फैक्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा. और सबसे ज्यादा इनका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है फार्म्स में, फैक्ट्रीज में या फिर माइंस में. ह्यूमन बीइंग्स इन द इंडस्ट्री आर एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज. जो ह्यूमन का, मानव का सबसे ज्यादा जो शुरुआत की गई इन इंडस्ट्रियों के माध्यम से की गई, जैसे वेरियस उनमें भिन्न भिन्न एक्टिविटी की गई, लाइक जैसे एक्सट्रैक्शंस, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड. जो भी औद्योगिक धंधे होते हैं जब उनका वर्गीकरण किया गया ऑन द बेसिक ऑफ द रे मटेरियल्स, साइज में एंड ऑनरशिप में. इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड. इंडस्ट्री क्या होती है? वो एग्रो बेस्ड होती है, मिनरल बेस्ड होती है, मैरीना बेस्ड होती है एंड फॉरेस्ट बेस्ड होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ रे मटेरियल दे यूज. ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिक ऑफ द रे मटेरियल. नंबर फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चलिए पढ़ते हैं. These types of the industries use plant and the animal based products as their raw material. यहाँ तक कि जो ये इस तरह की इंडस्ट्री होती है जिनमें पशुओं के द्वारा भी कार्य किया जाता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग का, वेजिटेबल ऑयल्स का, कॉटन टेक्सटाइल का, डेयरी प्रोडक्ट्स का एंड लेदर इंडस्ट्रीज का आर एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. आगे है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. मिनरल बेस्ड होते हैं, देयर आर द प्राइमरी इंडस्ट्री. जो भी प्राथमिक धंधे, औद्योगिक धंधे होती है दैट यूज मिनरल्स, जिनमें सबसे ज्यादा मिनरल्स और लोह अयस्क का प्रयोग किया जाता है एज दे रे मटेरियल के रूप में. द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्री में जो भी उत्पादन किया जाता है फीड अदर इंडस्ट्रीज, है ना. जैसे आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर. आयरन बनता है आयरन और अर्थात लोह अयस्क से. इस प्रोडक्ट ऑफ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, उसी को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं. अर्थात जिस मिनरल्स की प्रोडक्शन किया जाता है उसमें मिनरल्स का रे मटेरियल लगाया जाता है, इसलिए उस इंडस्ट्री को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं. दिस इज यूज्ड एज द रे मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ तक कि जब कच्चे उत्पादन लगाया जाता है किसी भी सामान को निर्मित करने के लिए ऑफ अ नंबर ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स सच एज द हैवी मशीनरी, तो हैवी मशीनरी के द्वारा, बिल्डिंग मटेरियल्स के द्वारा, द रेलवे कोचेस, ओके, उसी को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं. नेक्स्ट है मैरीना बेस्ड इंडस्ट्री. वी यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी. जो भी प्रोडक्ट हमें समुद्र से, ओशियन से रे मटेरियल के रूप में मिलता है. इंडस्ट्री प्रोसेसिंग सी फूड और द मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल. नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. द यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज रे मटेरियल. द इंडस्ट्री एसोसिएटेड फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स. यहाँ तक कि जो भी इंडस्ट्री लगाई जाती है वो लगाई जाती है पल्प से, पीपर से, फार्मास्यूटिकल से, फर्नीचर से एंड बिल्डिंग से. नेक्स्ट है इंडस्ट्री ऑन द बेसिक ऑफ साइंस. कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री होती है लघु धंधे, है ना. एन इंडस्ट्री वेयर द क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज होम बेस्ड. जहाँ पर जो भी उत्पादन किया जाता है वो एक होम बेस्ड पर किया जाता है rather than फैक्ट्री बेस्ड, और उसको फैक्ट्री बेस्ड बना लिया जाता है. while products, जब उसमें प्रोडक्ट की जाती है, सेवा दी जाती है, by cottage industry are often unique. जो कुटीर धंधे होते हैं वो इसी तरह के होते हैं. and given the fact that they are usually not mass product. okay, producer होता है इन सेक्टर में often face numerous disadvantages when trying to compete with much larger factory based companies. okay, चलिए नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री. द क्राफ्टमैन
manufactures goods by using local raw material with the help of his family member. जो क्राफ्टमैन होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, सामान को अपने रॉ मटेरियल पर अपनी फैमिली की हेल्प से. The products are produced for the local use. जो भी प्रोडक्ट करते हैं वो लोकल यूज के लिए करते हैं. Work is done mostly by hands. मोस्टली जो भी वर्क किया जाता है वो हाथों द्वारा किया जाता है एंड डज नॉट यूज मैकेनिकल पावर. नेक्स्ट है बास्केट मेकिंग हुई, जैसे मैट वीविंग हुई, रॉक्स हुई, पॉटरी हुई, मेकिंग ऑफ द सिंपल यूटेंसिल्स हुई, फर्नीचर हुआ, आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री. नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. Small scale sectors plays an important role in the development of every country. In a developing country like Bharat, this sector is dispensable. Since independence, small scale units have made significant progress. After agriculture, small scale sector provides highest employment of the labor force. Since small units are widely dispersed, they provide jobs to local residents. In the sphere of the production, this sector provides a major share in the industrial production of the country. Large scale units are also dependent. जो large scale industry होती है वो dependent होती है on the small units of the various needs पर. And necessarily units which are very important for big units. यहाँ तक कि जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं वो बड़ी यूनिट को इम्पोर्टेंस देती है और बड़ी यूनिट छोटी छोटी चीजों से को इम्पोर्टेंस देती है. गवर्नमेंट ऑफ द भारत ऑल्सो इंक्रीज, जो भारत सरकार है वो इंक्रीज करती है डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल यूनिट थ्रू इंडस्ट्री एंड द फाइनेंशियल पॉलिसीज को, जिससे वो क्या कर सके, इंक्रीज कर सके. नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का. मैन्युफैक्चरिंग इज डन, मैन्युफैक्चरिंग जब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पावर ड्राइवन मैकेनिक्स मशीन्स द्वारा, द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टू बी सोल्ड इन द मार्केट. नेक्स्ट है द मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट. नेक्स्ट है these industries are the main source of employment in the developing countries. These industries produce sugar, vegetable oil, leather goods and electrical goods, etc. Next है large scale industry. On way to define a large business is that is operates beyond its own local or the regional area. That's a starting point, but not a particular useful definitions when even the smallest companies sell and ship globally on the internet. Another option is to the consider a business large if it exceed as be a definition of a small business. Though again that is the pretty limited perspective for banking purpose. Federal law consider any business to be large if it is generates 1 million in gross revenue or if it is the publicity listed one of the national exchanges. The Organization for Economic Cooperative and the Development considered any business with 250 or the more employees to be a large scale enterprise. यहाँ तक कि जो सबसे बड़े जो लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री होती है उसमें 250 या फिर 250 से मोर देन लोग काम करते हैं, उसी को लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं. नेक्स्ट है मेन फीचर ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इसमें लार्ज इंडस्ट्री करने के लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है. इट एम्प्लॉयज द लार्जर नंबर ऑफ द वर्कर्स, और यहाँ तक कि जो वर्करों की संख्या वो भी अधिक होती है. एंड कंज्यूमर वेस्ट क्वांटिटी ऑफ द पावर. नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक roads, refinery, banking, insurance market, etc. The production is only on large scale. Automobile industries like shipbuilding, iron, steel industry and the textile industries are some of the example of the large scale industries. Okay, चलिए. Industries on the basic of ownership. On the basic of ownership, industries can be classified as number first है public sector. Public sector क्या है?
These industries are aimed, these industries ऐसी aimed होती हैं and operated होती है by the government agency द्वारा. नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर होता है. These industries are owned and operated by private entrepreneurs. एग्जाम्पल है टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड द डाबर इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट जॉइंट सेक्टर. These industries are jointly run by the state and the individual on a group of the individual, like जैसे ऑयल भारत लिमिटेड is jointly owned by public and the private sectors. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर में. These industries are owned and operated by the producer or suppliers of raw materials, workers or both. They pool in the resources and share the profits or losses proportions, at least such as the sugar industry in the Maharashtra, the coir industry in Kerala. चलिए आगे है major industries. As we learned how industries work, classified according to raw material size and ownership. Here we will learn the distribution of the some major industries, which are iron and steel industries, and the textile industries are the oldest industries that have had their role in the Bharatiya industrializations. Okay, information, technology in and the amazing industries. जो टेक्नोलॉजी होती है वो भारत की इंडस्ट्री को इंक्रीज करने में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है. ओके, चलिए नेक्स्ट किड्स. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैव देयर फर्म होल्ड इन द कंट्री. जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होती है वो एक बड़े लेवल की इंडस्ट्री होती है. लाइक जैसे ये होती है जैसे जर्मन में, यूएसए में, चाइना में, जापान में एंड रशिया में. वाइल्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो वाइल्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं फ्लोरिशिंग इन भारत में है, हांगकांग में है और साउथ कोरिया में है. द न्यू एम्ब्रेजेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज देयर कंसंट्रेशन इन सिलिकॉन वैली ऑफ द कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर ऑफ भारत. भारत के बेंगलोर में इस तरह की कंपनियां पाई जाती हैं. नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. Iron and steel industries are famously known as the feeder of all the other industries. The products of these industries are used as the raw material in other industries. As we learn the industry system, the industry comprises of various input, process and outputs. The input included raw material. जहाँ तक कि जो input होता है वो हमारा raw material पर depend होता है, जैसे iron ore, labor, capital and other infrastructure पर. Iron ore is then converted. Iron ore से convert कर दिया जाता है स्टील में by various processing द्वारा, like smelting and the refining द्वारा. Okay, चलिए finally the output is the steel. और जो उसका finally output निकल कर आता है वो आता है as a steel के रूप में. Steel and iron can be called as the basic material needed in every other industry. No doubt there are backbone. यहाँ पर एक backbone है of the modern industry की in a developing country like भारत. Or iron steel industry has taken the advantages of the cheap labor, raw material and the ready market. Okay, चलिए केस स्टडी है जमशेदपुर में एंड आयरन द स्टील सेंटर्स में. द फर्स्ट स्टेप फॉर सेटिंग अप द स्टील कंपनी. यहाँ तक सबसे पहले जब इसको सेटअप किया गया था हैज बीन टेकन इन 1882 बाय जमशेदपुर चटर्जी एट द एज ऑफ 43. जब वो 43 के थे. देयर 3 years लेटर, 3 साल बाद भारतीय नेशनल कांग्रेस एंड हैड बीन फाउंडेड. इसके संस्थापक बने. विद द नेशनलिस्ट फेवर सेट इनटू मोशन, जमशेद जी टुक द नेशनलिस्ट स्टेप. जमशेद जी ने इसके प्रति इसको बढ़ाने के लिए नए नए कदम उठाए. फॉर द कंपनी फ्रॉम द भारत में इन कंपनियों का स्थापित किया जाए. टू हिज सरप्लस विद द वीक्स. यहाँ तक कि उन्हें लगभग 3 सप्ताह लगे. 8,000 इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब द टाटा ऑफर्स. और लगभग 8,000 इन्वेस्टर्स ने टाटा को ऑफर किया. एन अमाउंट ऑफ द 2.32 करोड़ स्टील प्लांट. यहाँ तक कि स्टील प्लांट लगाने में उन्हें लगभग 2.32 करोड़ लगे. 1 lakh tons including the cost of the setting up of the township has been raised
On February 1692 में 1912 में the first steel ignite ruled out the lines of the Sakchi plant. During World War I, 1952 to 1919, Tata ने एक्सपोर्ट किया 150 miles of steel rails of Mesopotamia में. They followed many ups and downs, and again the Second World War provided much needed flips to the company. और Second World War में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की नीड हुई. Today, Tata's hold only about 8% in the Tata Steel. जो टाटा स्टील पर लगभग 8% कब्जा किया हुआ है. 50% is held by public finance institutions and the rest by 265,000 shareholders. All that reflects the Tata philosophy of the nationalism translated into the action in many other business ventures. Okay, चलिए. Conditions that favored setting up and the success of the Jamshedpur plant. मैनेजमेंट कैसे किया? द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द कंपनी, जो महान कंपनियों में से है, वॉज एंड हैज बीन द टाटा मैनेजमेंट. टाटा ने जब उसको व्यवस्थित किया, इन इज आउन वर्ड्स में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रखा. इज अ पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी एंड द लैंडस्केप ऑफ द भारत एज मच पार्ट ऑफ हर एंड हर माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स. नेक्स्ट रे मटेरियल, हाई क्वालिटी हेमेटाइट वेराइटी ऑफ द आयरन. यहाँ तक कि उच्च क्वालिटी की जो आयरन होते हैं हेमेटाइट और आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड के सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होते हैं. गुरुमाशिनी माइंस ऑफ द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. नेक्स्ट है कॉइल फ्रॉम झारी एंड रानीगंज से. मैग्नीशियम प्राप्त हुआ नॉर्मल नावमुंडी से. लाइमस्टोन एंड द डोलोमाइट्स गेट हुआ हमें सुंदरगढ़ से, पालमू से, हजारीबाग से और रांची एरिया से. ये ट्रांसपोर्ट है. जमशेदपुर लाइज ऑन द कोलकाता नागपुर रेलवे रूट एंड इज वेल कनेक्टेड बाय रेल्स, रोड एंड एयरवेज. नेक्स्ट है वाटर फॉर कूलिंग, वॉशिंग purpose is obtained from स्वर्णरेखा रिवर. स्वर्णरेखा रिवर, यहाँ तक कि जो स्वर्णरेखा नदी है उसमें पानी के कूलिंग के लिए, वॉशिंग के लिए आदि के लिए यूज किया जाने लगा. एंड स्टोरेज डैम्स हैज आल्सो बिल्ड अक्रॉस खाकरी रिवर. और उसके अलावा यहाँ पर खाकरी रिवर का डैम्स भी था जिससे पानी का प्रयोग किया जाता था. फिर पोर्ट फैसिलिटीज, टाटा इंजीनियरिंग एंड द लोकोमोटिव कंपनी Talco, Tata Metals and the Strips Ltd, Bharat Steels Rolling Mills Limited, Tata Tinkan Limited, Tata Corp Metals and the dozen other industries producing chemicals, wires, cables, locomotive parts, agricultural implements are all located in the Jamshedpur or in the vicinity. This ensure local supplies and the demand for various products. यहाँ तक कि स्टील से बने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को टाटा ने बनाना शुरू कर दिया. ओके, चलिए आगे हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इज द फाइबर. टेक्सटाइल क्या है? एक फाइबर है दैट इज वोवन फ्रॉम फाइबर, जो एक फाइबर को कपड़े को बुनने में काम आता है. इट टेक्स रे मटेरियल. यदि हम रे मटेरियल लेते हैं जैसे कॉटन और वूल, द प्रोसेस कॉलिंग स्पिनिंग, और जब उसको बुनने में डाला जाता है इनटू अ यार्न, धागे में बदला जाता है, दैट इज लेटर यूज्ड टू क्रिएट द फाइबर, और उससे जब ये कपड़ा तैयार किया जाता है. फाइबर्स कैन बी नेचुरल. फाइबर क्या है? नेचुरल है और मैनमेड भी है. नेचुरल फाइबर्स हैं जैसे हमारे पास कॉटन, जूट, लिनन, वूल एंड सिल्क. और मैनमेड फाइबर्स हैं हमारे पास नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर. The man has been wearing, जो मनुष्य द्वारा पहना जाता है, using fabric since ancient times में. The textile industry is one of the oldest industry in the world. And until the industrial revolution, जो भी औद्योगिक क्रांति हुई, the textile industries used wheels and looms to weave fibers. During the revolution, power looms were introduced first in Britain. After that, textile industries expanded in
Mumbai, because of its warm, moist climate, facilitated of part of the importing machinery and exporting the output and above all the availability of cheap labor. Some of the well-known and the highly demanded fibers are muslin from Dhaka, chinters from Musailipatna, of the calicos of the Calicut, gold wrought cotton from Surat, Burhanpur and the Vadora. ओके चलिए केस स्टडी है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन भारत as it has been stated earlier, जैसे ही उन दिनों में भारतीय कॉटन टेक्सटाइल हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री. द मुसेलिन ऑफ द ढाका इज अनडिवाइडेड भारत, कैलिको ऑफ कैलिकट, chintases of the Musailipatna, gold wrought cotton pieces of Burhanpur, Surat and Vadodara were well known worldwide before industrial revolution. Since handlooms or the hand-woven cottons fabrics were much costlier than machines-made goods, they could not withstand competitions. Coupled with his British also discouraged growth of the cotton textile in Bharat. Though a first successful cotton textile mills was established in Mumbai in 1854, first company was established by the Tata groups. The company was named, company का जो नाम था Empress Mill, as it was established on the day on January 1st, 1877, when Queen Elizabeth was crowned the Empress of Bharat. By this time, there was already a dozen mills in Mumbai, which came to be called the Cotton Palace of Bharat. Okay, on the lines of the Manchester in England. Again, during this period, many industries usually came up along cost of the facility shipment. Many industries usually came up along cost to facilitate shipment. Such industries, based on their locations, came to be called the port industries. The British through continued to discourage growth of industries in Bharat. The two World War boosted the development of many industries, including steel and cotton in Bharat. During partition, Bharat suffered some setback and soon recovered when the cotton textile industries began to spread its wing all over Bharat. There are today more than 80 towns and the cities in the Bharat where cotton textile mills are located. Main centers of the location are in the state of the Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. The industries employs about 36 million people 2001 and makes a contribution of about 14% to industrial production of the country. The total production of the cloth by all sectors, this is mill, handlooms, khadi and silk, has reached around 44,000 million square meters based on 2001 figures. The exports today account for about 30% of Bharat total export value. However, share of the cotton fiber to total value of all fibers has come down and stand in the ratio of 43.57 to cloth fibers and other fibers, including synthetics, among chief competitors of Bharat in the international market as China, Japan, Bangladesh and Pakistan. Okay, चलिए केस स्टडी है कंपैरिजन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन अहमदाबाद भारत एंड द ओसाका जापान. ठीक है, चलिए करते रीड आउट. अहमदाबाद भारत में और एक ओसाका जापान में. इट इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती इन गुजरात. जापान की बात करें, इट इज कोस्टल टाउन एंड द रैंक्स अमंग द बिजनेस स्पॉट ऑफ द नेशन. First textile was set up 1859.
इट सेटअप मिल्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेटअप हो गया था। द कॉटन है जो चीफ रे मटेरियल है, ग्रोन लोकली होता है। यहाँ पर रे कॉटन का इंपोर्टेड होता है। इट्स ग्रोथ इज लाइक टू ग्रोथ ऑफ द मुंबई, यहाँ पर जो ग्रोथ होती है मुंबई में सबसे ज्यादा कॉटन पॉलिसीज ऑफ भारत की स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है। वो ट्रेडिशनली रूप से बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री सम रे मटेरियल वर अर्लियर आल्सो imported. नेक्स्ट है साउथर्न लोकेशन ऑफ द पोर्ट, मस्ट क्लाइमेट एंड द चीप विमन लेबर्स, यहाँ पर जो विमन होती है वो चीप लेबर्स में काम करने आ जाती है। फेवरेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोथ ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है most of spinning of yarn is done by smaller mills. It is about 50 small mills. उसके बाद में only large plant are found and the most of the work is automated. Next a lot of manual work is done. जापान में ये most advanced technology is applied. It is known as Manchester of Bharat. It is known as the Manchester of Japan. It undertakes manufacture of the variety of the cloth including dhotis and sari. Specialization in one type of the cloth is practices. It suffers from multitudes of problems like absolute machineries, inadequate power supply, high labor cost. High profit sectors है like जैसे steel, electrical equipments and shipbuildings are replacing cotton textile industries. The industry works under several constraints and the entrepreneurship's climate is lacking. उसी तरह the industry is highly modernized and entrepreneurship climate exhibits does flexibility. Next, the cotton depends on vagaries of the weather and the mills also suffers on account of the raw material. Next, it uses chemical as raw material like in the case of the synthetic fibers and suffer from similar disadvantages. Okay, चलिए आगे है किड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी deals with the storage, processing and the distribution of the information. During decades, the industry has gained global attentions due to the series of the political, technology and social economics events. Bharat is witnessing the emergence of information technology hubs in Bangalore. यहाँ तक कि भारत में सबसे ज्यादा जो बुद्धिमानी और टेक्नीशियन का जो हब है वो है बेंगलोर में, मुंबई में, हैदराबाद में और चेन्नई में. ओके, द सिलिकॉन वैली एंड द बेंगलोर both share many same aspects in the development of informal technologies such as pleasant climate, skilled workforce, presence of the high quality educational, technological and scientific centers and the access of markets. Okay, चलिए कैसे स्टडी है कंपैरिजन ऑफ द सिलिकॉन वैली का यूएसए में और बेंगलुरु का भारत में. ऑल्दो भारत स्टार्टेड लेट, वास्तव में यद्यपि भारत में जो भी कार्य होते हैं थोड़ा धीमी गति से होते हैं. इट टुक रैपिड स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. जल्दी ही उन्होंने सॉफ्टवेयर में जैसे ही प्रगति करनी शुरू की और प्रोग्राम्स में एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड टू कंप्यूटर्स और कंप्यूटर से संबंधित ऑपरेट करना शुरू किया. दिस मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. यहाँ तक कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, worth as over 27,000 crore in 1996 to 97 में, which further scaled up in 2002 से 2003 के mid में. Highly skilled and technical personnel who earlier went to seek jobs elsewhere in the West or in the USA now found green pasture in Bharatiya soil itself. यहाँ तक कि अपने आप में जो यूएसए में पाया जो ग्रीन पास्चर है और भारत की जो मिट्टी है सबसे अधिक उपजाऊ अपने आप में मानी गई है. इट पुट अ स्टॉप ऑफ ग्रीन ड्रेन. द प्रोसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी का प्रोसेस किया गया इन यूएसए में और भारत में, देयरफॉर प्रोवाइड्स अ गुड ग्रोथ. उन्होंने अच्छे से अच्छा उत्पादन करना शुरू किया. फॉर कंपेयरिंग टू रिप्रेजेंटेटिव्स लोकेशन ऑफ द टू कंट्रीज के, द टू रिप्रेजेंटेटिव लोकेशंस ऑफ द सेंटर्स फॉर ग्रोथ आर सिलिकॉन वैली and USA and Bengaluru in
बेंगलोर इन भारत, यहाँ तक कि भारत के बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली यूएसए में सबसे ज्यादा जब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया तो उसमें प्रोडक्शन और भी अधिक देखने को मिला। The above compared study clearly reveals that the information technology sector is a high technology area. ये जो दोनों सेक्टर हैं वो हाई टेक्नोलॉजी एरिया से युक्त है एंड इज साइंस बेस्ड ग्रोइंग मोर, और जब साइंस बेस्ड उसको ग्रोइंग किया गया मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एवरी डे, दिस नॉलेज ड्राइवन इंडस्ट्री इज होल्डिंग great promise of transforming Bharat and hold comparative advantages over other industries. It needs skilled manpower, which Bharat has a plenty. As already stated, to prevent concentration of the industry in the sector area, the government of the Bharat has promoted software technology parks all over Bharat. The government approaches is different. It ways to the use computer as a tool to spread knowledge and create awareness, and to make every farmer a computer savvy. That trend is the quite discernible in the agriculture sector itself. Okay, चलिए आगे है computer. The information represented on the computer is in the form of the series of the binary digit. जो कंप्यूटर होता है सबसे ज्यादा बाइनरी डिजिट पर काम करता है, और द न्यूमरल्स 0 to 1 से 0 to 9, therefore the electronic computer बोलते हैं is also called digital electronic computers. It was first invented in USA में किया गया 1946 में फॉर मिलिट्री पर्पस के लिए, with the invention of the microelectronics and the microprocessor in computer. इसे माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक या माइक्रोप्रोसेसर भी कहा गया। There can about an information revolution. उसने रिवोल्यूशन संबंधित बहुत सारी सूचनाएं प्रदान की। It enabled high storage capacity to tiny chip. छोटी सी चिप में बहुत बड़ा स्टोरेज समाहित होता है, as well as the performance of the multiple tasks. The semiconductor chips, वह जो छोटी सी चिप्स होती है, came to be used in the various types of the electronic equipment like radio, television and computer. All these new developments are therefore regarded as a part of the subdivision of electronic industry. The semiconductors are also solid that conducts in transmission as well as in amplification of the electrical signals, because they are interconnected tiny pieces. They are also known as chips. इसी को हम चिप्स के नाम से जानते हैं. The computer is essentially an assemblage of the millions of these semiconductor or chips. Because the small or the teeny size of these electronic devices, they are also called microelectronics. उसी को microelectronics कहते हैं. In भारत में microelectronics revolution started in 1980 for almost 3 decades after it has begun in the USA. Okay, chaliye. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.